हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने 51 प्रॉब्लम्स कर लिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉडुलस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट 52nd, बिकॉज लास्ट क्लास हमारे पास हमने कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करा था। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 52। तो ये जो सेट लिया गया है, दिस इज लेट अस राइट हियर। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या किया गया है कि वी आर जस्ट टेकिंग मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू 2। इसका मतलब ये रेड जो लाइन है ये इंक्लूडेड है, और इसके अपर का रीजन और इसके लोअर का रीजन, एंड मॉड ऑफ 1 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन हमारे पास है, इट मींस इट इज योर x इज इक्वल टू 1 एंड इट इज x इक्वल टू -1। तो इसके लेफ्ट का रीजन और इसके राइट का रीजन। ओके, तो दिस इज योर y इक्वल टू 2 एंड दिस इज y इक्वल टू -2। ओके, तो ये रीजन हमारे तो आइए जरा लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट लिखते हैं। इट मींस इंटीरियर सेट इज इक्वल टू, so all those points we are not including the boundary here, so mod of x is greater than 1 and this is mod of y is also greater than 2. Okay, next we talk about the limit point. It will drive set a dash. A dash is just equal to x comma y, such that this is mod of x is greater or equal to 1 and this is mod of y is greater or equal to 2. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास ये बाउंड्री भी इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द क्लोजर। दिस इज ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू a union of a dash, and that is your a dash, because a dash is superset for a. So here this is isolated point। क्या होता है वो पॉइंट जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मींस a माइनस a dash, so it will be empty because every point is limit point. So since this a interior is not equals to a exactly, this implies not open। इसका मतलब ये सेट ओपन नहीं है। Since this is a dash, which is not subset of a, this implies not closed. So this set is not closed and it is not bounded। बाउंडेड भी नहीं है बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास y and x both is tending to infinity। Okay, so this implies not compact। नॉट कॉम्पैक्ट है ना। सिंस क्लोजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू होल प्लेन R2, दिस implies नॉट टेंस। और क्लियरली हम जैसे देख पा रहे हैं इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड नहीं है, वी कैन जस्ट से क्लियरली, क्लियरली नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, एंड दिस implies नॉट कॉन्वेक्स। ओके, नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी नहीं है। एंड next we talk about the perfect and discrete। So since this is a dash is not equals to a, this implies not perfect। And since this is isolated points, a is not equals to a, this implies not discrete as well। Okay, so these are answers। जो जो पूछा गया था, तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। क्या क्या पूछते थे क्वेश्चन के अंदर। ये 4 चीजें हमें निकालना है। 4 सेट, एक तो इंटीरियर, ड्राइव सेट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, क्लोजर एंड द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट फॉर द फॉलोइंग। एंड द टेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ओपन। ओपन हमने डिस्कस कर लिया, क्लोज देख लिया, बाउंडेड देख लिया, कॉम्पैक्टनेस देख ली, डेंस देख लिया, पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, कॉन्वेक्स, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट, हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। ओके, next we can just have 53rd problem। okay, so इसमें यहाँ पर क्या किया गया है, वी हैव जस्ट टेकन दिस इज, यहाँ पर जो
आपका ग्रीन लाइन्स है, या कह सकते हो एक्स, जो एक्स पे हमारे पास एक्स इक्वल्स टू वन और एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये भी इंक्लूड करा गया है। एंड द रीजन बिटवीन द वाई इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू माइनस। ओके, so here we can just see कि what will be the interior। तो इंटीरियर में ये इक्वलिटी हट जाएगी, तो इट विल बी एक्स कमा वाई, एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस देन टू। एंड नेक्स्ट वी कैन जस्ट से कि दिस इज अ ए डैश, तो ए डैश के अंदर बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगी, तो वी कैन जस्ट से दिस इज एक्स कमा वाई, such that mod of x is greater or equal to 1 and mod of y is less or equal to 2। नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, दैट इज योर a closure, and that is equals to a union of a dash, and that will be equal to a dash। नेक्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट है। आइसोलेटेड पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो आइए जरा लेट अस सी द प्रॉपर्टी। So since this A interior is not equals to A, this implies not open. It is not open set, and this since this is limit point का set is not a subset of A, this implies not closed, ठीक है, and not bounded, and this implies not compact। For the compactness, it should be closed and bounded. Okay, so not compact. Since this is E closure is not equals to whole plane R2, this implies not dense. So it is not dense. Okay, it is not path connected. Not path connected and not connected as well. And not convex and not convex। है ना, कॉन्वेक्स के लिए स्ट्रेट लाइंस, अगर दो पॉइंट्स को हम मिलाएं स्ट्रेट लाइन से, तो वो स्ट्रेट लाइन विद इन द सेट होती है। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो पाथ कनेक्टेड तो नहीं हो सकता, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। लेट अस since this is E dash is not equals to E, this implies not perfect, and since this is isolated points का set is just equal to into T, which is not equals to A, this implies not discrete। ये सेट हमारे पास डिस्क्रीट भी नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज 54th solution of this। So here we included both the boundaries। Okay, so here when we writing the interior point, we exclude the boundary, this is x comma y, such that mod of x is greater than 1 and mod of y is less than 2। Okay, and if you are writing the drive set, तो drive set ये पूरा पूरा set ही हो जाएगा, so this is drive set। Okay, next if you are writing the closure, it will be A again, and if writing the isolated points, it's just equal to B। Next we can just see, since this is A interior is not equals to A, this implies not open, but it is closed। Since A dash is the subset of A, this implies it's a closed set, but not bounded। Not bounded, bounded नहीं है, because we are this y तो fixed है, but x is tending to infinity, it is not bounded, this implies not compact, this set is not compact। Okay, next we can just see is not compact, since A closure is not equals to whole plane R2, this implies not dense। Dense नहीं है। Not path connected, clearly not path connected, connected, not connected, set connected भी नहीं, not connected and not convex। Okay, नेक्स्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो सिंस E dash is just equal to A, this implies perfect set। perfect set
Since this is isolated points A, which is not equals to A, this implies not discrete. Okay, so these are answers about this test. Next test की तरफ बढ़ते हैं. Here we are taking x is greater equal to 1 and modulus of y also taking greater than 2. So आइए जरा writing the solution of this test. So first we writing the interior. तो इंटीरियर में बाउंड्री हमें इंक्लूड नहीं करना होता है. तो दिस इज mod of x is greater than 1, mod of y is greater than 2. नेक्स्ट है तुम्हारे पास a dash. So a dash will be what? It will be your x comma y. So that बाउंड्री यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है बिकॉज बाउंड्री लिमिट पॉइंट बन जाते हैं. mod of y is greater equal to 2. नेक्स्ट है आपके पास क्लोजर. तो ये क्लोजर विल बी इक्वल टू a dash because a dash is the superset for a and isolated point there is no isolated point, it is empty set. तो देख रहे हैं कि a interior is not equals to a, so इसका मतलब is not open. Since a interior is not equals to a, it implies not open. And since a dash is not a subset of a, it implies not closed, also not bounded. This implies not compact. This implies not compact. Since a closure is not equal to voltage R2, this implies not dense. Dense in R2. Okay. Not dense. Then we can say not path connected. Not path connected. Also not connected. Not convex. Since a dash is not equals to a, this implies not perfect. Since this is a ISO of a, it is not equals to a, this implies not discrete. Okay, so this is not discrete, not perfect. Next, 56 problem. So here we can just see यहाँ पर हमने बाउंड्रीज को इंक्लूड कर लिया है. जैसे mod of x is greater equal to 1, mod of y is also greater equal to 2. So what will be the interior? This is a interior is just excluding the boundary comma y such that mod of x is greater than 1 and its mod of y is greater than 2. Next we can just say drive set. This is a dash will be what? Clearly यही सेम सेट हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री में इंक्लूड करना होता है. एंड mod of y is equal to 2. तो ये हमारे पास a अगेन आ जाएगा. A closure will be equal to a, and next we can just say isolated points of a is just in space. Clear? So according to this, let us write the properties. Since a interior is not equals to a, this implies not open. तो ये सेट हमारे पास ओपनिंग है. Since a dash is a subset of a, this implies closed set. But not bounded. This implies not compact. Since a closure is not equals to whole plane R2, this implies not dense. Or clearly it is path connected. Clearly it is path connected. Sorry, not path connected. Sorry, क्योंकि यहाँ पर पाथ नहीं है ना इस रीजन से इस रीजन में जाने के लिए किसी भी. तो इट्स नॉट पाथ कनेक्टेड. नॉट कनेक्टेड. कनेक्टेड एंड नॉट कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स भी नहीं दिख रहा है. इट्स नॉट कॉन्वेक्स. ओके. And next we can just say
अबाउट सिंस परफेक्ट एंड डिस्क्रीट की बात करें तो ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज इट इज अ परफेक्ट सेट एंड since ISO of A is not equal to A, it implies not this. Okay. Next आते हैं when mod of, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वी आर टेकिंग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, इट मीन आई हैव द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन इन आर रीजन एंड मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन टू। इसका मतलब वाई एक्सिस पे लेना है लेस देन टू एंड ग्रेटर देन माइनस। तो इसके बीच का जो रीजन है, तो इसका मतलब द पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस व्हिच इज लाइज बिटवीन y इज इक्वल्स टू टू एंड y इज इक्वल्स टू माइनस, इसके बीच में। तो ये जो हमने ग्रीन कलर में जो थोड़ा सा दिखाया है, ये जो दिस इज द रीजन, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ द सेट, तो सेट के पॉइंट। तो इसको जब हम लिख रहे होंगे इसके जब इंटीरियर का, तो इंटीरियर यहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि एक लाइन ही है, और लाइन पे हम जब कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो वो हमारे पास आउटसाइड द लाइन चली जाएगी। इसका मतलब है कि देयर इज नो पॉइंट दैट विल बी द इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब इसका जो इंटीरियर सेट है दैट विल बी फाइव। अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास ड्राइव सेट लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट इस लाइन के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होंगे एज वेल एज दिस कॉर्नर पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी है वो आ जाएगी, दिस विल बी एक्स कमा वाई, this is mod of x is just equal to 1 and this is mod of y is less or equal to 2. This is the drive set. Okay, next closure हमको लिखना है। तो this closure, a closure is just equal to a union of a dash and that will be a dash again. Isolated point, there is no point which is not limit point, so this is empty set. तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर since this is a interior, it is empty, is not equals to a, this implies not open, so this is not open set. Since a dash which is other than the set, है ना, सेट के अलावा भी कुछ दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो नहीं चार पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर this will be not a subset of a, this implies not closed. Yeah, it is bounded, है ना, clearly it is bounded, ठीक है। So it is bounded. Since this is not closed, this implies not compact. Since a closure which is not equal to whole plane R2, this implies not dense. तो ये हमारे पास dense नहीं, ठीक। ठीक है, not dense. It is path connected. It is path connected. No, sorry, it is not path connected because जो एक हमारे पास इधर का रीजन है ना, जो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट इधर का कोई अगर पॉइंट होगा उसको दूसरे से मिलाना होगा तो हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड। आल्सो नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स एंड since a dash is not equals to a, this implies not perfect and since this is ISO of a, which is empty, is not equals to a, this implies not disjoint, ना ही discrete है ये सेट, ना ही परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर क्या करा कि हमने इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया सेट के अंदर। तो लेट अस सी कि हमारे पास क्या आंसर होंगे। पहला तो हमारे पास जो इंटीरियर है दैट इज एम्प्टी ही रहेगा बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड एनी पॉइंट दैट विल बी इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए डैश, ए डैश तो ये पूरा पूरा सेट बन जाएगा, एक्स कमा वाई देन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 and mod of y is less or equal to 2, that is your A again. Okay, next क्लोजर की हम बात कर लेते हैं। तो ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए
एंड आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइसोलेटेड ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू empty. There is no point that will be made. Isolation. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आइसोलेटेड ऑफ ए इज इक्वल टू 5. So since A interior is not equal to A, this implies not open. It is not open, and since A dash is the subset of A, this implies closed, fixed, and bounded. Bounded meaning. So this implies compact. A compact set. Okay. Since A closure which is not equal to whole plane R2, this implies not dense. है ना, dense नहीं है, not path connected, not path connected, not connected, connected भी नहीं है, and also not convex. Since this is A dash is just equal to A, this implies perfect set. Perfect set है, but since implies not discrete. Okay, तो ये हमारे पास discrete set नहीं, but it is perfect. The ninth problem, solution of this problem is what? यहाँ पर हमने mod of x is equals to 1 and mod of y is greater than 2, मतलब ऊपर साइड का है ना, so it will be unbounded. So let us see. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो इंटीरियर है वो तो इम्पिटी ही रहेगा यहाँ पर भी, बट जब हम बात करेंगे ई डैश की तो इक्वलिटी आ जाएगी, मीन एक्स कामा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज मॉड ऑफ हो जाएंगे। तो ए क्लोजर जब हम लिखेंगे ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ई डैश, एंड सिमिलरली दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू ई, इट इम्प्लाइज नॉट ओपन, इज नॉट ओपन एंड आल्सो नॉट क्लोज्ड because there is just some extra point which is the limit point. So this implies not closed, it is not closed. Next we can just see the not bounded as well, not bounded. So this implies not bounded, not compact. Okay, since the closure is not equal to R2, this implies not dense. Okay, and clearly when you say not path connected, not path connected, not connected, है ना, and not convex. Since since A dash is not equal to E, this implies not perfect. And since isolated point E is not equal to E, this implies not discrete. Okay, so this is the answer of this set. Next, प्रॉब्लम नंबर 60। तो यहाँ पर अभी 3 पॉइंट्स को ले लिया गया है। तो फर्स्ट जब हम इंटीरियर लिखेंगे तो इंटीरियर तो इम्पिटी सेट ही आएगा, बट जब ए इटसेल्फ आ जाएगा है ना, एक जो भी है mod of y is equal to 2 and that is equal to 8. Number third, a closure is just equal to a, and isolated point of a is just equal to 1. Okay, next we can just see कि हमारे पास जो since this is the interior is not equal to a, this implies not open, ये open नहीं है। Since a dash is the subset of a, this implies closed set, it is closed set but not compact, not dense, and no, since we can say a closure is not equal to whole plane R2 and not path connected, not connected, not convex है ना, convex भी नहीं है, not convex. और next we can just say about the since since E dash is just equal to E, it implies perfect set, it is perfect set. Since ISO of A is just equal to okay, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो हमारे पास दो ही पॉइंट हो सकते हैं, एक तो यहाँ से जो निकलेगा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1
और माइनस, है ना। इसी तरीके से मॉड ऑफ वाई इक्वल टू टू, इट मीन्स दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये दो लाइंस हैं, है ना, ये लाइंस है, तो इन लाइंस को इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट इन बोथ द लाइन, दैट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट विल बी दिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास, एक्चुअली अगर हम इस सेट को ही लिखना चाहें, so we can just see clearly कि this is the point here x is equals to -1 and x equals to 1, और यहाँ y equals to 2 and y equals to -2। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आ जाएंगे, दिस इज -1, 2, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा 1, 2, तीसरा हो जाएगा तुम्हारे पास नीचे, दिस इज -1, -2, है, एंड दिस इज 1, तो ये चार ही पॉइंट्स हैं हमारे पास, और दो जो कि सेट के पॉइंट्स होंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, क्लियरली हम इसको अगर लिखना चाहें, तो अब यहाँ पर देखिए, तो आंसर तो वही। तो यहाँ पर हम, अगर हम इंटीरियर की बात करें, तो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज बिकॉज हमें इंटीरियर पॉइंट के लिए इनफाइनाइट सेट का होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ओपन डिस्क जब हम लेंगे, तो ओपन डिस्क हमारी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा होता है, फिर अनकाउंटेबल पॉइंट्स कंटेन किया होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, इट इज रिपीटेड, एंड इट विल बी आल्सो नॉट द लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसके लिए इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, कि हम अगर कोई भी ओपन डिस्क बनाए तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के कंटेन हो। तो यहाँ पर ड्राइव सेट भी इनफिनिटी सेट आ जाए। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्लोजर की, ई क्लोजर, यू नो दैट इट इज ई यूनियन ऑफ इट है, तो हियर इट विल बी ए बी, इट इज द क्लोजर, है ना। इसके अंदर, इस क्लोजर के अंदर ए आ जाएगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ई माइनस ई टेन, मतलब सेट के वे मेंबर जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं, तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब लिमिट ई है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, सिंस ए इंटीरियर इट इज नॉट इक्वल टू ई, दिस इंप्लाइज नॉट ओपन। ये हमारा सेट ओपन, नॉट ओपन। ओके, सिंस E dash, and that is your phi. And phi you can just write the subset of E. So this implies it is a closed set. Or clearly it is bounded. It is bounded. चार ही point है. So this implies compact set. It is a compact set, है ना? So this is closed set and bounded, and it will be the compact set. ओके, तो अगर हम बात करेंगे क्लोजर की, तो सिंस इट इज ई क्लोजर विच इज नॉट इक्वल टू होल प्लेन R2, दिस इंप्लाइज नॉट टेंस, दिस इज नॉट टेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट टेंस, एंड देन इट्स नॉट पाथ कनेक्टेड, क्लियरली तो नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, एंड नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, since this is E dash, this is a not equals to E, so this implies not perfect, not perfect. Since isolated of A, since isolated of A is just equal to E, so this implies it is a discrete set. It is a discrete set. Okay. Next one. Okay. Next हम 62 प्रॉब्लम को करते हैं, तो सोल्यूशन लिखते हैं। दैट इज योर नंबर 1, दैट इज इक्वल टू A इंटीरियर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारे पास ग्रीन में थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये हमारा पास पोर्शन हमारे पास क्या है, दैट इज योर इंटीरियर। ओके, तो सॉरी, तो ए इंटीरियर यहाँ पर, ये सारे पॉइंट हमारे पास इम्पटी सेट, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो दैट इज योर इम्पटी सेट, देयर विल बी नो पॉइंट विल बी द इंटीरियर पॉइंट। फिर अगर ड्राइव सेट लिखने जाएंगे, तो वी हैव दिस इज सम ऑफ y सच दैट mod of x is less or equal to 1 and mod of y is equal to, ठीक है। नंबर थर्ड वी कैन जस्ट सी, फिर आइसोलेटेड पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 5, so no point will be the isolated point, okay। So since this is A interior is not equal to A, this implies not open, is not open, and here A dash is not a subset of A, this implies not closed. It is bounded, yeah, bounded है, but not compact, compact नहीं होगा क्योंकि closed नहीं है। R2 this implies not dense, with dense नहीं है।
Next, we can just see not path connected, not path connected, not connected, not convex, convex. Clearly दिख रहा है ना not convex. और since this is it is not equals to A, this is like not perfect. It is not perfect. So since ISO of A is not equals to A, this is like not discrete. So discrete being okay. So this is the answer about the problem number 62. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 63. तो इसमें हमने बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. तो क्लियरली ये इंटीरियर इम्पटी रहेगा बिकॉज इट वन सेगमेंट है. दूसरा ए डैश की अगर बात करेंगे तो ई आ जाएगा. नंबर थर्ड एक रोटेट की बात करेंगे तो ई रहेगा. नंबर फोर्थ आइसो की बात करेंगे तो इम्पटी रहेगा. तो दिस इज नॉट ओपन, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, प्लस बाउंडेड है ना. दिस इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट. क्लोजर बाउंडेड इज कॉम्पैक्ट, नॉट डेंस, क्योंकि क्लोजर उसका इक्वल नहीं है. नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स. Since A dash is just equal to A, this implies perfect. It is a perfect set. Not discrete clearly. It is not discrete. है ना. तो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होगी. दिस इज वन क्लोज, नॉट ओपन, क्लोज बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, नॉट डेंस, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स. परफेक्ट है बट नॉट डिस्क्रीट. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. 64th problem which is right solution. ओके सो फर्स्ट यू कैन जस्ट राइट इंटीरियर. तो यहाँ पर अभी ये पॉइंट है ना जो ये लिखा हुआ है मतलब ये लाइन से. तो इसका जो इंटीरियर है दैट इज इम्पटी रहेगा और उसका ए डैश है. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कामा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड इट इज मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 2. ये रीजन हमारे पास आ जाएगा. जब एक क्लोजर की बात करेंगे दैट विल बी टू सेट. So since this is A interior is not equal to A, this implies not open. ये open set. और एक क्लोज सेट भी नहीं है since A dash is not a subset of A, this implies not closed. और is X is tending to infinity है, not bounded. This implies not bounded. Is not bounded. Okay. So compact नहीं है, not dense है. This is the closure is not equal to whole R to say this implies not dense. This is not dense. Okay. And not path connected, not path connected, and not connected, not convex. And since since A since A dash is not equal to A, it implies not perfect and not discrete as well. है ना. डिस्क्रीट भी नहीं है. तो आइए नेक्स्ट जो मॉडुलस के ऊपर लास्ट प्रॉब्लम है 65th प्रॉब्लम. तो लेट्स राइट दिस. तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिख रहा है ये रीजन है. साथ में इनकी हम इन पॉइंट्स को ले लिया है ना जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 ले लिया है ना. तो सबसे पहले इंटीरियर, इंटीरियर तो इम्पटी सेट ही आएगा. देयर विल बी नो इंटीरियर पॉइंट. बट जब हम ड्राइव सेट लिखने जाएंगे तो ये पूरा सेट ए ही आ जाएगा सारे पॉइंट्स के लिए. लिमिट पॉइंट नेक्स्ट इक्वल टू ए. एंड फिर आइसोलेटेड पॉइंट्स की हम बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू इम्पटी. ओके तो सिंस सिंस आइसोलेटेड पॉइंट का सॉरी इंटीरियर पॉइंट इज नॉट इक्वल टू है ना. सिंस इंटीरियर पॉइंट इज नॉट इक्वल टू ए तो इसका मतलब नॉट ओपन. तो सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए इट इज लाइक नॉट ओपन. So this is not open set, but it is closed. Since A dash is subset of A, this implies this is closed set. It is closed set, है ना. It is not bounded, not bounded, bounded नहीं है तो compact नहीं होगा. तो this implies not bounded. This implies not compact. Since A closure is not equal to whole plane R2, this implies not dense. इसका मतलब dense नहीं है. पाथ कनेक्टेड नहीं है, नॉट पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड नॉट पाथ कनेक्टेड.
नॉट कनेक्टेड एज वेल, ठीक, नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वी कैन सी कि since A dash is just equal to A, so this implies the perfect set. ये perfect set है। uh, uh, since uh, and since ISO of A is equals to but is not equals to A, this implies not this perfect set है but it is not a disk। ओके, तो दीज आर आंसर्स फॉर द मॉडुलस सेट, है ना, मतलब मॉडुलस के ऊपर बेस्ड सेट थे जिनके हमने आंसर्स लिख डाले हैं, है ना। दीज आर आई हैव कंप्लीटेड, आई थिंक मॉडुलस के ऊपर हमने 25 प्रॉब्लम्स करी, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग तरह के सेट्स को हमने, सब भी सारे सेट्स को हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आप इनके आंसर्स को लिखिए, खुद से ट्राई करिए और तरीके के सेट्स को फॉर्म करिए ज्योमेट्री पर, और देखिए कि उनके इंटीरियर पॉइंट्स, उनके लिमिट पॉइंट्स के बारे में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी की, जो कि R2 के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।